Hi guys, this is Dr. Yokesh Arul from GB Pant MAMC and I'm pretty sure हर मेडिकल स्टूडेंट का एक सपना होगा कि भाई दिल्ली जाना है, वहाँ पढ़ाई करना है क्योंकि यार ऑब्वियसली बेस्ट फैकल्टी, मैक्सिमल पेशेंट लोड एंड एवरीथिंग। एंड आज मैं बताने वाला हूँ कि भाई यहाँ सिर्फ सपना नहीं है, नाइटमेयर्स भी उतनी है। सो as you all know कि I studied MBBS in a private college. My dad had to pay a hell lot of fees. He had to sell his land, and MD में I just managed to crack a peripheral college. And then finally, I promised myself कि भाई अच्छे से पढ़ाई करना है and we'll secure the best college. And I got into Delhi GB Pant का MAMC. So, and my AIMS का rank was also 13, but I wasn't getting AIMS Delhi. I was getting all the peripheral AIMS. But I decided कि नहीं यार ये हमारा what to say, it is a surgical branch, so maximal hands-on will be better in a government hospital. So as soon as I came here, things were pretty cool, ठीक है, because I joined around June 20 and उस time summer vacations चल रहा था for consultants. So consultants over here get around a 2-month vacation. So things were quite chill. Seniors weren't very toxic at the start. I mean, it was like pretty decent. I mean, I'm not sure whether I was supposed to say that over here, but काफ़ी scenes were a bit cool, but the workload was massive. Like we had to work like a machine by सुबह से रात तक. Like सुबह I had to report to the hospital around 7:45 a.m. and एक दिन होता है OPD day and the next day we had a procedure day. ठीक है. So alternate day, every day used to be hectic work. And our duties usually get over by 9:15 to 9:45 depending upon the number of patients and workload के हिसाब से. So my seniors were like, और योकेश बताओ कैसे लग रहा है, how is the hectic workload over here? Then I was like, ठीक है सर, मतलब थोड़ा सा hectic है but it's fine, I mean it's manageable. Then he was like, थोड़ा सा hectic है बेटा, रुक जा, अब होगा असली दिवाली. I was like, दिवाली सर वो तो अक्टूबर में है ना. He was like, नहीं बेटा, from August 1st the consultants will be back, बस तब तू देख लेना. And I was like कि भाई क्या देखना है. So August 1st came 1.5 months later and all the consultants start to come in the rounds, all right. And मेरा जो colleague है, his name is all right, I don't want to say his name, let's say XYZ. तो उसका नाम XYZ है and so the consultants were checking all the file and उसने basically एक छोटा सा blunder किया. Basically क्या हुआ, the patient was shifted from ward to the ICU and उसने बस शीट में सारे डिटेल्स नोट्स लिखा बट ही डिडंट मेंशन द वर्ड ट्रांसफ़र नोट्स. मतलब सिंस द पेशेंट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वार्ड टू द आईसीयू, उसने बेसिकली पैराग्राफ वाइज भी वही लिखा कि द पेशेंट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन व्यू ऑफ इंक्रीज लैक्टेट्स, हाइपोवोलेमिक शॉक, दिस दैट, सब कुछ लिख दिया पर उसने बस टाइटल नहीं डाला. कंसल्टेंट ने लिटरली सबके सामने उसको इतना डांटा, आई कुड नॉट ब्रीथ फॉर अ सेकेंड. I was breathless for 10 seconds. कंसल्टेंट ने पूछा कि भाई तुमने MD कहाँ से करा, एंड उस बंदे ने बोला कि फ्रॉम निम्स. नाउ निम्स इज अ कॉलेज इन हैदराबाद, ठीक है, एंड दिस ईयर आउट ऑफ टॉप 100 रैंक्स आई थिंक मोर देन 15 to 20 पीपल वर्स फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट. आई मीन हैदराबाद का बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो. एंड इवन इन आवर कॉलेज आउट ऑफ 6 seats, top 3 ranks were from NIMS. Rank 1, rank 8 and rank 13. Everything from NIMS. Consultant was like, भाई तूने MD कहाँ से करा, तो MD में क्या सीखा. एंड मैं साइड में बैठ के सोच रहा हूँ कि भाई मैं तो बस एक पेरिफेरल गवर्नमेंट कॉलेज से करके आया एंड आई कुड नॉट ब्रीथ. भाई मेरा लिटरली PTSD हो गया. Then that day, entire day I was thinking about this only कि भाई क्या है यार, उसको ऐसा डांट दिया, अब मेरे को हर चीज़ में इतनी एक्यूरेसी के साथ लिखना होगा एंड इट हिट मी अप विथ सो मच एंग्जाइटी. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. एंड ड्यूरिंग लंच टाइम माई टीम यूजली कॉल्स मी अप एंड वी हैव अ क्विक मीट कि भाई रील अगले दिन क्या रील डालना है, कंटेंट में क्या क्या डालना है, एंड दिस एंड दैट, ऑल राइट, ड्यूरिंग माई लंच ब्रेक. सो वाइल आई हैव लंच इन द हॉस्पिटल वी ऑलवेज हैव अ क्विक 10-minute मीट. Then they were like, भैया आज रात क्या क्या स्क्रिप्ट करना है, कल सुबह क्या शूट करना है. I was like, भाई रुक जा, मेरे को पहले सांस लेना है. So before you, since you guys don't know my schedule, so मेरा हॉस्पिटल का ड्यूटी रहता है 7:45 8 in the morning and it goes up till 9:15 9:45. So as soon as I step out of the hospital, I get a call on with my team and my manager and we start discussing about scripts कि भाई कल क्या स्क्रिप्ट करना है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है. I reach home in like 20 minutes. By the time I reach home,
I quickly close everything, I script down quickly, and I wake up around 5:30 a.m. in the morning, get ready quickly, and we shoot from 6 to 6:30. 6:30 I leave to the hospital. Hospital के पीछे एक gym है. Get in a quick workout, and then I run to the hospital. So this is like my basic schedule. So rewinding back in time, after all this PTSD and trauma, I was like, भाई रुक जा, अब मेरे को कंटेंट का तो पता नहीं. The consultants just came and they are just literally slaughtering everyone. And यहाँ ना most of the consultants are from AIMS, ठीक है, because AIMS में in general the hands-on are very less because it's medical gastro is a more of a procedural branch. So GB Pant again, it's like a government hospital, and we get all the referrals from Loknaik. Loknaik some direct transfers लेता है, सफदरजंग से काफ़ी referrals आते हैं, and we get a lot of referrals from GTB, UCMS, बहुत सारे आते रहते हैं, ठीक है, because a lot of patients require ERCP, and this is like the primary center. So amidst all this crowd, we were like, चलो ठीक है, अब consultants are strict, workload काफ़ी hectic है, let's get through this. Then the senior came, और योगेश कैसा लग रहा है? I was like, sir, बहुत अच्छा लग रहा है. He was like, बेटा तो रुक जा, अब बस प्री दिवाली आया, असली दिवाली तो अब तक आया नहीं. Then I was like, क्या? Then he was like, अब तो academic शुरू होगा, इसके बाद there'll be presentations, journal clubs, seminars, case presentations. Then I was like, sir, वो तो first year का तो नहीं होगा ना? I mean, it starts from second year and third year. Then he was like, नहीं बेटा, तुम लोग के लिए बस 2 weeks का कैलिब्रेशन टाइम है. अगस्त सितंबर स्टार्ट या अगस्त एंड से शुरू हो जाएगा, रोस्टर आएगा. Then I was like, wow, बस यही सुनना बाकी था. The presentation started. Now my colleague had the first presentation, ठीक है. Now let's say he was from Lady Hardinge Medical College, ठीक है, and he's extremely intelligent, ठीक है. I'm not going to mention his name. Let's say his name was ABCD, and he had a presentation on all this ulcerative colitis का diet and all. So during his presentation it didn't go so well, ठीक है. I mean, let's be honest, भाई तुम कितने भी अच्छे से present कर लो, वो लोग सबका मारेंगे, ठीक है. One consultant was like, भाई यहाँ तो पढ़ाई लिखाई डॉक्टर बैठा है, ऐसा present कर दो. And trust me, that guy secured a seat in AIMS Delhi DM gastroenterology. He left that and he came to gastro in GB Pant. उतना इंटेलिजेंट है वो बंदा. उस बंदा को ऐसा बोला. He literally stopped mid presentation. He didn't know what to say. I was looking at him from the back and I was like, भाई साहब क्या हो रहा है? My heart rate literally naturally went to 120. For those who don't know, the natural heart rate is between 60 to 90, and it just skyrocketed. And I was like, भाई जब मेरा presentation होगा, what will be my scenario? And ये बस just एक ट्रेलर था. They screwed him left and right. They literally screwed him, ठीक है. So at the end of the presentation they were like, तेरे को represent करना ही पड़ेगा. And he was like, fine sir. He had a representation and all those also got over and I had my presentation. Then I was like, भाई I am तो so screwed. I had a seminar. तो seminar में कैसा होता है, you'll have to take all the research articles and contradict the guidelines. And I was like, भाई guideline is a treatment index कि भाई people will just follow it blindly. And my consultant was like, तेरे को इतना research करना है, you have to collect data and disprove it. I was like, कहाँ से disprove करूँ? Then I was like, fine, देख लेंगे. I made my PPT, spent 10 hours. The day before the seminar, I didn't even sleep. I slept for, I guess, 15 to 20 minutes. I went. First slide, introduction. Second slide, continuation of the introduction, prevalence and all. Third slide, I went into the treatment options because my topic was, treatment in special populations in hepatitis C. Then one sir was like, agenda कहाँ है? Basically हर सेमिनार में you have to have an agenda कि after this topic ये होगा ये होगा ये होगा, which is completely factual, but I didn't know that. So कहाँ है यार? Then they all started bashing me left right, ये कहाँ है, ये special condition क्यों नहीं है. Then I was like, चलो अब तो representation तो होने ही वाला है, लग रहा है, but I just got away with it. डांट तो पड़ा, सबको पड़ता है. I just got away with it. Then I was like, I was actually traumatized. मेरे पास मन में एक ही चीज़ था कि भाई at least I should have slept. क्योंकि डांट तो पड़ना ही था. At least I should have slept properly. But all this
just went over like a cloud. And it was very hard, क्योंकि such intelligent students getting bashed left and right for even tiny mistakes is kind of crazy. But then I realized, कि GB Pant MAMC is like one of the top institutes. ठीक है, I have studied in peripheral, I have studied in private, and I'm studying in the best. And मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि यार एक best is a best for a reason. ठीक है, when you're applied so much pressure and workload, there are two types of people, right? Either you crack in the pressure and you just leave the seat, or you fight against it. Like you have to be like, चल भाई अब हमको करना ही है, right? So then you be like कि चल भाई you करना है ना, you build yourself. And trust me यार, that's how you learn. या तो यार see, इंडिया में ना बहुत सारे डॉक्टर्स रहेंगे, ठीक है, एंड डीप डाउन इनसाइड आपको भी पता है देर आर एवरेज डॉक्टर्स एंड देर आर सुपर्ब डॉक्टर्स. ये डिमार्केशन है, चाहे कुछ भी हो, राइट? सो व्हेन यू आर लाइक one thing I know for a fact कि भाई if I'm entering GB Pant, I know I'll be coming out one of the best super specialties ever. So I was quite happy about that, and I'm not gonna lie, there were multiple instances where I thought I should resign. Not even kidding. बहुत डांट पड़ता है, छोटे छोटे चीज़ के लिए डांट पड़ता है. Like you are expected to work for every minute, every hour without mercy. Nobody cares whether you have lunch, whether you have dinner. किसी को घंटा फ़र्क पड़ता है. एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम खाना टाइम से नहीं खाओगे ना, यू विल एंड अप विद TB मतलब आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ दोज पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो आर अवेयर ऑफ TB. इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़ एंड वंस यू गेट TB यू हैव टू ईट मेडिकेशंस फॉर 6 months 9 months. एंड हमारे यहाँ तो प्राइमरी सेंटर है, सो वी गेट MDR TB, XDR TB. सो इफ़ यू गेट दैट डिजीज़ you're screwed, super screwed. तो तुमको टाइम में खाना भी खाना है. At the same time you should work. Nobody cares whether you eat, drink water or anything. So balancing through all those was very tough. But like I said na, a hard thing either breaks you or makes you. And मैं चाहता हूँ कि यार this thing should make me into a better person. And मुश्किल बात ये है कि I have to do this and balance this with my content creation. I've started YouTube. I'm shooting long form for that. I'm doing Instagram short form for that. मैं जिम भी जाता हूँ. I cannot miss gym. Among all this chaos, मेरे को बस एक चीज़ याद है यार. I promised my old Yokesh. When I entered GB Pant, I was like कि भाई चाहे कुछ भी हो, चाहे like कितने भी हेक्टिक हो, I will do it. मैं कर लूँगा. मैं बेस्ट डॉक्टर भी बनूँगा, मैं बेस्ट कंटेंट क्रिएटर भी बनूँगा. नो मैटर वॉट. बिकॉज मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि यार अगर एक इंसान को टाइम है ना, वो लाइफ में कुछ भी कर लेगा. एंड आई हैव कम हियर थ्रू एवरीथिंग यार. मतलब आई गेस यू गाइज वुड हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोज़, माई पास्ट, माई एक्स गर्लफ्रेंड लेफ्ट मी बिकॉज ऑल आई डू वाज स्टडी. एवरीथिंग लाइक इट वाज क्रेजी. ठीक है, सो कमिंग टू सच अ पॉइंट कि वेयर तुम बेस्ट इंस्टीट्यूट में हो, you have a good social media following. I'm happy with you guys. Like you guys show a lot of love. मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ. I'm not even kidding. ठीक है, it kind of gets me anxious कि क्या मैं कर पाऊँगा क्या नहीं, क्या मैं नौकरी छोड़ दूँ, क्या मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँ. A lot of media people told me कि यार सोशल मीडिया छोड़ दे at least for 6 months. I was like नहीं, I will do it no matter what. And every time you guys comment on my videos, it just puts a smile on my face and it reminds me कि भाई we will never give up. We will get through this together. And I will explain in the part 2 where we'll be discussing about my next phase. और भी बहुत traumas हुआ है. Like yesterday was my birthday and I still had to fight through a lot. So we will continue this series of personal life soon.